Good afternoon everyone. How are you all? Fine after the long break, after the unfortunate tragedy. चलो we'll start with clocks today. अभी handouts आए नहीं है, अभी आपको मिल जाएंगे 5 मिनट में. Online people, I have uploaded the handouts in the group. चलो, so today we'll be starting with clocks. Now अगर मुझे the one thing that I want from you is आपको घड़ी में टाइम देखते आना चाहिए बस. इसके बाद मैं सारा सिखा दूंगा आगे. आता है सबको या स्टिल देयर इज समवन जिसको एनालॉग वॉच में टाइम देखते नहीं आता है? चलो, सो क्लॉक्स में सी दिस ईयर देयर वर 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स ओनली. क्लॉक से देयर वर 2 क्वेश्चंस. लास्ट ईयर 23 में नन, 22 में आई थिंक देयर वाज 1 क्वेश्चन फ्रॉम क्लॉक्स. इजी टॉपिक है बट देयर आर ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स हियर. 2 अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम, रिलेटिव स्पीड एंड मिनट स्पेसेस का. थोड़ा सा पेशेंटली सुनना पड़ेगा. एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस. ठीक है. नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड. इनिशियली examiner might ask you to find the angles between the hands. There are 3 hands but majorly we'll focus on 2 hands, the minute hand and the hour hand of the clock. ठीक है. तो दोनों hands के बीच में what is the angle at different times, or let's say the clock has rotated from 11 o'clock till 4 o'clock, so what is the angle rotated by one particular hand? So इस तरह के questions can be there. या it can be there, suppose the time is 12 o'clock and our hand has rotated 120 degree. Now what is the time? So vice versa questions can be there. ठीक है. Next can be find the time. Find the time when both the hands of the clock coincide between, let's say, between 2 and 3 o'clock. Now find that exact instant of time when both the hands of the clocks are coinciding. Yeah, when the hands are opposite. These are just the kinds of questions that we will see abhi aage. Yeah, they are at certain angles to each other. So suppose I'll tell you that time is somewhere between 2 and 2:30 and the hands between 2 hands of the clock, the angle between 2 hands of the clock is 90 degree. Find out what time is that. So these are kinds of questions that we'll see and how to find that. Yeah, meeting of 2 hands. एक question इससे आया था. If you remember that from 10 to 1 या 2, the question was if you go from 10 AM to 1 था या 2 PM था, how many times both the hands of the clock will coincide? So directly यहाँ से एक question था. Faulty clocks are the ones that are not rotating 24 hours in 24 hours of actual time. Either it is fast or it is slow. घड़ी का सेल खत्म हो गया है, so it will be slow. Then these are faulty clocks वाले question. कि suppose you have 2 clocks, one is correct, other is faulty. What will be the time difference after certain amount of time? All such questions will deal in faulty clocks. And then mirror image. Suppose you are not seeing the watch, seeing the clock directly, instead you are observing it through a mirror या some other reflection, then what will be the time that you will see? So these are the kinds of questions that we'll see in this topic. अब इसमें suppose this is a clock. पहले minute hand. We'll talk about minute hand first. अब minute hand, let's say the time is right now 1 o'clock. After 1 hour, अच्छा, first thing, this complete circle is equal to how many degrees? 360 degree. Basic, clear? So this complete circle is 360 degree. Now when time becomes 2 PM, when time becomes 2 PM, from 1 to 2 PM, what happens to this minute hand? When time increases from 1 PM to 2 PM, what happens to this minute hand? It starts rotating from 12, comes back at 12. ये हो रहा है. How much it has rotated in 1 hour? So in 1 hour, it has rotated 360 degrees. In 1 hour, it has rotated 360 degrees. 1 hour is 60 minutes. Can I say in 60 minutes it has rotated 360 degrees? Basic. So 60 minutes में it is rotating 360 degrees. How much will it rotate in 1 minute? Basic maths.
In 60 minutes it is rotating 60 degrees, so in 1 minute it will rotate 360 by 60, that is 6 degrees. 6 degrees per minute. Can I say this is the speed of rotation of minute hand? आप कोई भी घड़ी ले लो, in any clock the minute hand rotates complete circle in 60 minutes. So it rotates with this speed 6 degrees per minute. In 60 minutes it is rotating 360 degrees. So 1 minute में कितना rotate करेगा? 360 by 6, 360 by 60, that is 6. Fine. I'll keep coming back to this again and again. बार बार बताऊंगा. 6 degrees per minute rotation of minute hand. Same for hour hand. In the same time, in this 1 hour of time, hour hand rotates from 1 to 2. अब ये कितना एंगल है? अब see, this is complete clock. It is divided into how many? Total 12. We'll call it as one sector. ठीक है? Can I say सारा बराबर होगा सब में angles? All these angles will be equal. Tell me how much angle will be this? 30 degrees. कैसे? Total is 360. 360 divided into 12 sectors. जिसको बेसिक आता है ना वो बोर होगा थोड़ी देर. I am starting from 0 एकदम. ठीक है? तो एकदम बच्चों टाइप बताऊंगा. So total is 360 degree. It is divided between 12 sectors. So each sector will be of 30 degrees. So ये कोई भी आप sector ले लो, any sector will be of 30 degree. Fine. So now in 1 hour, hour hand rotates from 1 to 2. This is one sector. One sector is of, take any sector, it will be of 30 degrees. So in 1 hour, hour hand is rotating 30 degrees. Minute hand was rotating 360. It is rotating 30 degrees. 1 hour is 60 minutes. 1 hour is 60 minutes. So in 60 minutes it is rotating 30 degree. So in 1 minute it will rotate 30 by 60, which is half. So half degrees per minute. This is the speed of rotation of hour hand. 30 degree by 60. अभी से भारी लग रहा है ना? पर मिनट. अरे बहुत बेसिक चीज है. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग हाउ मच एंगल both the hands are rotating. If the clock is correct means it is rotating 24 hours in 24 hours of actual time, then the minute hand will rotate with this speed, which is 6 degrees per minute, and the hour hand will rotate by half degrees per minute. Basic. Anyone having doubt in this, online people? चलो, if there are no doubts, we'll move now. ये basic समझ में आया? I'll keep coming back to this again and again because we will be using this. हटा दूं? So we will be using this. Minute hand covers 360 degree in 1 hour. That is in 60 minutes it covers 360 degree. So its speed will be, it covers 6 degrees per minute. Similarly, hour hand covers half degrees per minute because it rotates only 30 degrees per hour. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबकॉन्शियसली घुस जाना चाहिए दिमाग में. ठीक है? So इसको we'll see what are these concepts later, but अभी we'll start with very basic questions. शीट्स नहीं मिली आपको? चलो, डोंट वरी, बोर्ड से सॉल्व कर लो अभी. यू डोंट नीड टू राइट क्वेश्चंस, यू विल गेट द वर्कशीट. आ गई है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप. इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व ओरली ओनली.
Online people, is the volume level fine now? Varsha? चलो तो easy question है. The accurate clock shows 10 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 3 o'clock in the afternoon? Basic. Initially 10 o'clock. Then 3 o'clock. This is for 10, this is for 3. So our hand will rotate this much. ये कितना है? अब जिसको नहीं आ रहा है, see how many sectors it has rotated. 1 sector, 2, 3, 4 and then 5. It has rotated by 5 sectors. Each sector is of 30 degrees. So 5 into 30. आपसे डायरेक्ट हो गया है तो गुड, बट जिसको नहीं आता है यू कैन सी बाय सेक्टर्स ऑल्सो दैट ईच सेक्टर इज ऑफ 30 डिग्री. इट हैज रोटेटेड टोटल 5 सेक्टर्स, so total it has rotated by 150 degrees. Fine. Next करें. Again solve it orally. Hmm. 90. The time, initial time was through how many degrees does the minute hand rotate between 5 to 5:15 p.m. So we need to focus only on minute hand. Initially minute hand was at 12. Finally it will be at 5:15. It will be at 3. So it has rotated by 90 degrees. को बताना है. It has rotated total 3 sectors, each sector of 30 degree. So total 90 degrees. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट. अब सॉल्व करो. People who are getting 84 as the answer, now solve. Suppose options were like this. Now how will you solve? Pass on that. Yes, 84 is the answer. हो गया. इसीलिए तो I have wrote 81 to 84. See, one thing will be direct, that time is 3:12 and the next time is 6. So initially my hand will be 3 से थोड़ा सा नीचे, slightly below 3, and the next hand is at 6. यहाँ से I can directly say it will be something less than 90. This is what you need to do in exam. It will be less than 90, so answer should be 84. But what if examiner gives you options like this?
They might give you options like this. अब कैसे करें? Suppose initially it was 3, finally it was 6, it would have been 90. ठीक है, but actually it is 312. So can I say in the next 12 minutes this hand has rotated by some amount? In the next 12 minutes this hand has rotated by some amount, and what is that amount? What is that angle? अभी देखा था R hand, this is the R hand है ना, तो R hand rotates at what speed? 0.5. फिर से I'll repeat, R hand rotates in 1 hour 30 degrees. In 1 hour it goes from 3 to 4. 3 to 4 is 30 degree, any angle. In 1 hour it rotates 30 degree. 1 hour is 60 minutes. In 60 minutes it rotates by 30 degree. So in 1 minute it will rotate by 30 by 60, which is half. So speed of rotation of R hand will be, half degrees per minute. So in 1 minute it will rotate by half degrees. In this 12 minutes it will rotate by 12 into half degrees per minute. For the next 12 minutes it will rotate by 6 degrees. So can I say this whole angle, this 90 degree, will be decreased by 6 degrees? So 90 minus 6, that is 84. समझ आया? Anyone having doubt in this? Exam में if the options are like this, you can directly see that it will be somewhat less than 90. You don't need to calculate that it is 84, it is less than 90, just take 84. But if the options are like this, you need to calculate the actual angle. Fine? Prakash, I just explained how it is 84. Do I need to explain again? शायद आपका मैसेज पहले का था. चलो, we'll move to the next question. नहीं, solve. कैसे करोगे? Wrong. वन 110, जिसका 120 आ रहा है. See, for the people who are giving me 120 as the answer, at 12, चलो suppose one of the hand is at 12, अभी time is 12:20 है ना. Suppose one of the hand was at 12, the other hand was at 4. What would have been the angle between these two hands? If one hand was at 12, the other hand was at 4. What would have been the angle abhi in this case? बताओ. 120 in this case, because 1, 2, 3 and 4 sectors. 1, 2, 3, 4. So total 4 sectors are covered. Each sector is of 30 degree. अभी बताया था सबसे पहले. Each sector is of, आप लोगों का मिस हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? You came late. The clock is divided into total 12 sectors. 12 काटे हैं. Total is 360 degrees. 360 by 12 is 30. So each sector will be of 30 degrees.
each sector is of 30 degrees. So from 12 to 4, these are 4 sectors. So this angle should be 120. But this is when one hand is at 12, the other hand is at 4. Right now the situation is 12:20. At 12:20, one hand will be at 4, 20 minutes, the minute hand wala. But our hand will be slightly past 12. अरे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ना. घड़ी में बना के दिखाऊं क्या? आई स्पेशली बॉट दिस वॉच क्लॉक, सॉरी, बताने के लिए. सो थोड़ा सा इट विल बी पास्ट 12. डायरेक्टली करना है एग्जाम में तो दिस एंगल हैज टू बी slightly less than 120 degrees. So you can directly mark 110. You don't need to calculate in exam conditions. But what if the options are like this? See, we are preparing for both. ऐसे option आ गए तो you don't need to calculate. But what if options are like this? So how to calculate? The angle is 120 right now initially, but थोड़ा सा कम हो गया है. कितना? It is decreased by that much amount by which this hand, this is the R hand. So the amount by which R hand rotates in 20 minutes. 20 मिनट में R hand जितना रोटेट करेगा वही तो एंगल है ये. 20 मिनट ही तो आगे बढ़ा है ना R hand. R hand rotates with the speed of, अभी करा था पिछले क्वेश्चन में, half degrees per minute. So it will rotate by half degrees per minute for how many minutes? 20 मिनट. ये तो 20 मिनट्स का टाइम है ना फॉर आर हैंड. आर हैंड इज रोटेटिंग फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स. सो इट विल रोटेट बाय 10 डिग्रीज. फाइन. सो दिस एंगल इज 10 डिग्री. कंप्लीट एंगल वुड हैव बीन 120, but it is decreased by this much amount and this is 10. So angle has to be 110 degrees. Fine. डायरेक्ट आ जाए ऐसे कर लेना, देख लेना कि एंगल हैज टू बी लेस देन 120. इफ ऑप्शंस आर लाइक दिस देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस मेथड. समझ आ रहा है? एनीवन हैविंग डाउट है तो आई विल रिपीट द होल थिंग अगेन. अभी कितना टाइम हुआ है? 20 मिनट्स. अगर द टाइम हैड बीन 12, exactly 12, had the time been 12, the R hand would have been here. But time becomes 12:20. So when time becomes 12:20, minute hand तो यहाँ आ गया. But in this 20 minutes my R hand will rotate ना. So कितना rotate करेगा? It rotates by half degrees per minute and it will rotate for 20 minutes. समझ में आया? ठीक है. ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट? मेरा लिंगो यूज करने लग गए ऑनलाइन वाले. लिख रहे हैं चिल है सर. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Answer was 110. अरे बाय द एंड ऑफ द क्लास आप ओरली करोगे सारे क्वेश्चंस, पेन की जरूरत नहीं लगेगी.
people who are having doubt that 600 seconds past 5 p.m. मतलब 5 बजे के बाद, 5 के बाद 600 सेकंड्स. Yes, online people, correct answer. हाँ. चलो एवरीवन विथ मी, विल सॉल्व इट ओरली फर्स्ट, फिर मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा जिसको नहीं समझ में आएगा. ट्राई टू विजुअलाइज. द क्लॉक इज सेट राइट एट 12 noon. Initially the time was 12 noon, the clock was set right, दोनों, both the hands are at 12. By 600 seconds past 5 p.m. Right now the time is 600 seconds past 5 p.m. मतलब 5 बज चुकी है. 600 seconds after that. 600 seconds means how many minutes? 10 minutes. 600 सेकेंड है, 600 by 60, 10 minutes. तो right now the time is 5:10. The R hand has turned through how many degrees? So R hand कितना टर्न करा? From 12 till 5:10. ठीक है. Imagine from 12 till 5:10 कितना टर्न किया? From 12 till 5. From 12 till 5 how many sectors? 5 sectors, each sector is of 30 degree, मतलब 150 degree it has turned from 12 till 5. From 5 till 5:10 कितने minutes हुए हैं? 10 minutes. 10 minutes में how much will this hand turn? It turns by speed of R hand, half degrees per minute. For the next 10 minutes it will turn by half into 10, that is 5 degrees. So initially 150, then 5 more, total 155. अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? फिर भी एक बार बोर्ड पे बताऊंगा. So initially the time was, I am just drawing the R hand right now, 12. Finally the time was 5:10. 5:10 कैसे? 600 seconds past 5. Had the time been 5, so this angle would have been 5 sectors, each sector of 30 degree, that is 150 degrees. After this, for the next 10 minutes my R hand will rotate. It rotates by a speed of half degrees per minute. For the next 10 minutes it will rotate, so it will rotate by 5 degrees. Total will be 155 degrees. This is 150, this is 5 more. ठीक है, done. Online people, any doubt? Prakash, do I need to explain again? Vidhu, please ping me again on that group. I'll see all your queries there. Please ping me again there. अब हो रहा है ना questions? See, you can take any reference for the question. जैसे in the previous question I was taking 12 and then 5 and then from 5 to 5:10. यहाँ पर you can go from anywhere. You can start from 8 or you can directly start from 8:20 depending on how comfortable you are. Yes, online people, correct answer. कितना आ रहा है? 110.
130. How many of you are getting 110? How many of you are getting 130? 110, 30, 10, 30. कुछ का 10 है, कुछ का 30 है. For the people who are getting 110, time is 8:20. Right now time is 8:20. Minute hand will be exactly at 4. Minute hand यहाँ है. Hour hand will be slightly past 8 somewhere here. ठीक है, hour hand यहाँ होगा. अब tell me, is this angle greater than 120 or less than 120? Greater than. Greater than, तो how can answer be 110 or 120? See, जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी, from 4 to 8, what is this angle? How many sectors I have covered? 1, 2, 3 and 4. It has moved for 4 sectors, each sector of 30 degree. So 4 cross 30, that is 120 degree. ये 120 degree is the angle between 4 to 8. 4 घंटे है ना, 4 hours, so 120 degree. 120 is just this much, but ये तो थोड़ा सा ऊपर है, so it has to be slightly greater than 120. अब 130 होगा या 150? See, exam conditions में how to calculate and then यहाँ पर कैसे करना है. 150 में अभी यहाँ तक it is 120 degree. 150 कर दूंगा तो it has to be another 30 degree. So this hand has to be at 9 for this angle to be 150, but 9 से तो नीचे ही है because time is 8:20. So it is below line. This I know for sure. तो अब 9 से नीचे मतलब it cannot be 150. This is how you need to think in exam condition. You don't need to calculate there अगर options ऐसे हैं तो. ठीक है, so 150 भी नहीं हो सकता. But how to calculate that exact angle? How to calculate this? हाँ, चलो I'll erase. So one hand is at 20, at 4, other hand is slightly above 8. This I know it is 120 degrees. I need to calculate this angle. ये angle कैसे निकालूंगा? Had the time been 8 PM, had the time been 8 PM, 8 बजे होते तो this angle would have been exactly here, but the time has become 8:20. So in this 20 minutes my R hand has rotated and it has rotated and increased this angle. ये भी ध्यान रखना है कि it is increasing or decreasing the angle that is in consideration. It is increasing this angle. कितना rotate करा? In 20 minutes it rotates by half degrees per minute, and for the next 20 minutes it will rotate by 10 degrees. So it has increased this particular angle by 10 degree. So net angle will be 10 plus 120, 130 degree. Fine. कैलकुलेट करने का है तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस. नहीं आ रहा है डायरेक्ट बाय द ऑप्शंस. इफ यू आर गोइंग यू कैन गो बाय सिंपल लॉजिक अप्रोच ऑल्सो. डन. इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? किसी को लग तो नहीं रहा है क्या चल रहा है? फाइन, चलो नेक्स्ट. See, I know many of you might have read formulas in CLOCKS कि put the minutes, put the hours, you will directly get the angle. मत करो उससे. I'll give you various questions जहाँ फिर formula लगा नहीं पाओगे. Simple logic लगाओ that how the hands are rotating, what are their positions right now. इतना बस basic visualization कर लो, सोच लो, just observe how they are rotating and you will able to solve the answer.
इजी है, सबका आ गया। How many sectors here? From 6 to 8. I am taking, let's say, 8 as the reference. यहाँ पर let's say 8 is the reference. Had this hand been here at 8, this angle would have been 60 degrees. ये angle 60 होता, 8:30 is the time है ना. So in the next 30 minutes it will rotate by some amount. It will rotate by this much amount. This angle भी half into कितने minutes में rotate किया है? In 30 minutes. So it will rotate by 15 degrees. So 60 plus 15. 60 plus 15 gives you 75. ये तो कैलकुलेट करा. एग्जाम में हाउ विल यू डू डायरेक्टली? कैसे? सी आई नो दिस इज 2 सेक्टर एंड 30 मिनट्स. कैन आई से दिस विल बी हाफ सेक्टर? भाई 60 मिनट्स में इट इज वन कंप्लीट सेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर. So in 30 minutes this will be half sector. So this will be half of that sector angle. So you do not need to calculate. 30 degree पूरे sector का angle होता है. So half sector का angle will be 15 degree. So 2 complete sectors and 1 half sector. 2 and a half sector. 2.5 into 30. 75. ये एग्जाम में डायरेक्टली सोचना है तो कैलकुलेट करना है. So you can go by this. आप देखो ना, विच एंगल इज इन कंसिडरेशन. दिस एंगल वॉज इन कंसिडरेशन, इट वॉज इंक्रीजिंग, इसलिए ऐड कर दिया. हैड द टाइम बीन गिवन टू यू एज 7:58. सपोज इन दिस क्वेश्चन द टाइम वॉज नॉट 8:30, इट वॉज 7:58. तब आप कैसे करते? चलो अभी रुक जाओ, आगे करेंगे इसको. अभी will increase the level slightly. Zero degree. किसका आया 0 डिग्री? हो गया? कितनों का 0 डिग्री आया है? चलो इट विल नॉट बी 0 डिग्री. सपोज द टाइम इज 4. अगर टाइम 4 होता, सो आर हैंड वुड हैव बीन एट 4. मिनट हैंड 4:20 पे मिनट हैंड कहाँ होगा? इट विल बी हियर एट 4. बट द टाइम इज नॉट 4, इट इज 4:20. So at 4:20 minute hand will be here only, but our hand will be slightly past 4. Slightly past 4. This much. कितना आगे बढ़ जाएगा? It is that amount which it can rotate in 20 minutes. It rotates by half degrees per minute for next 20 minutes. So it will rotate by 10 degree. ठीक है? अब तो घुस गया होगा ना ये दिमाग में. ठीक है, चलो.
डन। अब ओरली हो जाएगा या डू यू नीड टू कैलकुलेट? So right now the time given as 5:15 p.m. Minute hand will be exactly at 3 at this time. ठीक है. Hour hand will be slightly past 5. Slightly past 5. Had it been exactly at 5, यही होता. So this angle would have been two sectors. Two sector is 60 degree. So this angle would have been 60 degree. But it has moved past 5 by this much amount and I'll have to add this. Add क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एंगल बड़ा हो रहा है when the hand is moving like this. अगर यहीं पर in the same case the time would have been 5:30. The time would have been 5:30. My hand would have been here, and when this hand rotates, initially let's say it was 30 degree, but when this rotates it decreases it by this much amount. मुझे यही एंगल चाहिए 5:30 में. आई नीड दिस एंगल ओनली. सो इनिशियली पूरा होता, इट हैज डिक्रीज्ड, द रोटेशन ऑफ आवर हैंड हैज डिक्रीज्ड इट बाय दिस मच अमाउंट. तो यहाँ आई विल सबट्रैक्ट, बट यहाँ पर आई विल ऐड. व्हाई? बिकॉज 60 प्लस इट हैज रोटेटेड बाय दिस मच अमाउंट एंड इट इज इंक्रीजिंग दैट एंगल. अब ये कितना है? 15 minutes में it will rotate by half degrees per minute, which is 7.5. So 60 plus 7.5 gives you 67.5. Fine. Had the options been like this, how will you calculate? For the people who are giving me 84 as the answer, had the options been like this, how will you calculate? मुझे पता है आप सब लोग अंदाजा लगा रहे हो अभी. ठीक है, 84 तो है. आंसर इज 84. कितनों ने अंदाजा लगा के निकाला था? ठीक है, ठीक है.
सी यू नीड टू सी द पोजिशंस ऑफ बोथ द हैंड्स. अभी तक ये हो रहा था. I'll tell you why this is different from the previous questions. In the previous questions you were given data like 15 या 20, 820, 420 जो भी we have calculated. These were the exact numbers which are represented directly on the clock. So from these numbers you can directly calculate the angles using the sector वाला चीज. Suppose the time was 5:15, so I know that this hand will be exactly at 3. So from 3 to 5 I can calculate this angle. But यहाँ पर in this particular question this hand is not at any particular number. This is somewhere in middle. 12 हो रहा है ना, 5:12 the time is. So अब यहाँ से I cannot calculate what is this angle. अगर आप वैसे approach कर रहे हो तो I'll tell you how to approach, but I'm just showing you how it is different from the previous questions. यहाँ पर you were given the data where exact that number was given which can be represented directly on the clock. So you can directly go by sector wala approach. Usually UPSC में you will be given datas like this. Usually, ऐसा नहीं कह रहा हर बार, usually. But what if you are given let's say 5:12? Take any reference जो आपको लेना है. यहाँ पर nearest to 5:12 it is 5. So I am taking 5 as the reference. So at 5 this will be my hour hand, this will be my minute hand. Fine. So initial angle, this angle is कितना है बताओ भाई? 5 sectors, each sector of 30 degree. So 150 degrees. This is the initial angle. Abhi what is happening is it will come slightly past 2. This is the minute hand. Our hand will go slightly past 5. थोड़ी distorted बनी है but you can imagine. So it will be slightly past 5 and this will be slightly past 2. अब see both the rotations of both the hands. Which angle is in consideration? This angle is in consideration. I need to calculate this yellow wala angle. Chill hai? When this minute hand rotates, it is rotating like this, it is making this angle. Initial angle, ये जो blue wala angle था, it was the initial angle. When it rotates like this, it is decreasing this blue wala angle. कम हो रहा है ना इन दोनों हैंड्स के बीच में. सपोज दिस वाज एट 5 ओनली एंड दिस हैंड कम्स फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एंगल इज रिड्यूस्ड. सो जब ये वाला आई विल कैलकुलेट तो आई विल हैव टू सबट्रैक्ट इट. व्हाट अबाउट दिस? द आर हैंड रोटेट्स फ्रॉम हियर टू 5:12. ये एंगल इट इज इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, सो आई विल हैव टू ऐड इट. अब पहले कैलकुलेट दिस एंगल एंड दिस एंगल. What is this angle? What is this angle? See, time is 5 initially. This is the angle rotated by the hour hand in 12 minutes. So it rotates by the speed of half degrees per minute for 12 minutes. So this angle is 6 degrees. This angle is rotated by minute hand. Minute hand rotates with the speed of, minute hand कितना रोटेट करता है in 1 hour? फिर से भूल गए हो आप लोग, मेरे को पता है. in 1 hour it starts from 12, it comes back at 12, it rotates complete 360 degrees in 60 minutes. 360 degrees in 60 minutes मतलब 1 मिनट में 360 by 60, that is 6 degrees. So it is rotating by 6 degrees per minute for how many minutes? This is 12 minutes. So total is 72 degrees. अब देखो क्या हुआ है. Initial angle is, initial angle 150. Initially 150 था, इसने रोटेट किया and decreased this angle by 72 degree.
At the same time it has increased this angle by 6 degree. बस आंसर आ जाएगा. So this is 150 minus 66, that is 84 degrees. See, मुश्किल नहीं है. We are doing the same thing, but until now we were only dealing with one of the hands because the data was given to you like this. तो यहाँ पर the minute hand was exactly at this particular point या exactly at this point, but अभी the data is like this. Minute hand is not exactly at any of these integer values. तो अभी we have to take into account rotation of both the hands. मिनट हैंड कितना रोटेट कर रहा है, आर हैंड कितना रोटेट कर रहा है, एंड इन विच डायरेक्शन दे आर रोटेटिंग, वेदर दे आर इंक्रीजिंग द एंगल और दे आर डिक्रीजिंग द एंगल. समझ आया? फिर से समझाऊं? बताऊंगा, फिर से बता दूंगा. The time is 5 initially. अब observe this angle. We need to calculate this angle between both the hands. If the time starts rotating from 5 till 5:12, see the rotation of both the hands. The minute hand is decreasing this angle, but at the same time my R hand is rotating away from this, so it is increasing this angle. So क्या करा है? Initial angle जो था, this was the initial angle, उसमें पहले just observe minute hand, it has decreased it by this much amount, which was 72 degree. अभी calculate किया था. It is rotating 6 degrees per minute for this 12 minutes. So for 12 minutes it will rotate by 72 degrees. So 72 degree rotate करा है, so ये angle it has decreased by 72 degree. But in this much amount of time my R hand has rotated by कितना? 6 degrees. So 6 degrees increase करेगा. Now 6 degrees is very insignificant, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत छोटा एंगल होता है, but it has slightly moved. ठीक है? बोर्ड पे तो नहीं समझाऊं? हाँ, यस अनीशा. Anisha, there were no brackets, so I just did it directly. Had there been brackets, I would have done by board mass. चलो. See, usually in exam angle लिखा होगा. Now angle between two hands can be this also and this also. This is what is reflex angle. So reflex angle is that angle which is greater than 180 degrees. So अगर reflex लिखा है, so you need to calculate the angle, initial angle between 715, between both the hands at 715, then subtract it from 360 degree. So करना same है, calculate initial angle at 715, then subtract it from 360 degrees. ठीक है? करो try. एग्जाम में ना घड़ी लेके जाना, द एनालॉग वाला, मतलब एनालॉग इज ओनली अलाउड.
हो गया. See, again the time is 7:15. 7:15, one hand will be exactly here at 3. Had this R hand would have been at 7. So this would have been 4 sectors, which is 4 into 30, that is 120 degree. अगर ये 7 पे होता तो, but it is slightly past 7. So this angle should be the angle that R hand rotates in 15 minutes. 15 minutes में कितना? 15 into half, that is 7.5. So this whole angle will be 120 plus 7.5, that is 127.5. This is the angle between these two ends, but we are asked the reflex angle. Reflex angle क्या होगा? This. So 360 minus 127.5. You will get. यहाँ ध्यान रखना, had there been an option like this, one, आधे लोग ये मार्क करते, मुझे पता है, you would have made an error, a calculation error. जब 360 minus 127.5 करते ना, तो आधे लोग इसको 233 कर देते. This is the mistake that usually happens. ये बस आपसे नहीं है, किसी से भी हो सकती है. So ध्यान रखना, ठीक है. I'm just pointing out some common mistake that you guys might do. An exam में there will be option like this, अगर ऐसा कुछ question आया तो. Fine. Calculate the angle between hands of the clocks. Atish, I didn't get your doubt. If at 7, then minute hand at 12. Please put previous slide. All of you calculate it at 7. क्या 18 लिखा था ना? Calculate hands of the clock. Angle between hands of the clock at 7:18. I thought I'll give you that calculate the angle between hands of the clock at the exact time जो अभी हो रहा है, but अभी 5 बज रही है, तो आप डायरेक्टली बता देते हैं आंसर. हाँ 23, 123 गलत है. ओनली 23 कैसे हो सकता है? one is the right answer. Seven 18 is the initial time. Let's take 7 o'clock as the reference. मैं orally करवाऊंगा.
लेट्स से दिस इज द रेफरेंस टाइम 7. ऑनलाइन पीपल विजिबल है ना? हो गई, बड़ा है. चलो 7 इज द रेफरेंस टाइम. आई नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल. ये क्यों? बिकॉज आई नो जब ये hand will be somewhere here, I'll have to calculate this angle only. So I am taking this angle as my reference. This angle is 7 sectors initially, 7 sectors each of 30 degree, total 210 degree. So initially this angle is 210. For next 18 minutes, minute hand will rotate. Minute hand rotates with the speed of 6 degrees per minute. So 718 पे it will rotate and come somewhere here. हो गया ना? So it will decrease this angle by this much amount. कितना होगा? 6 degrees per minute for 18 minutes. 6 into 18, 108 degree. So initially it was 210. It has decreased this angle by 108 degrees. दिख रहा है कैसे डिक्रीज करा? In the same time, my R hand was initially at 7 and it has moved past 7. थोड़ा सा आगे बढ़ गया है. In 18 minutes, it will rotate by half degrees per minute. कितना आगे बढ़ेगा? Half into 18, that is 9. So plus 9 degree. Plus why? क्योंकि it is increasing this angle. दूर जा रहा है ना, so it is increasing this angle. आप कुछ भी रेफरेंस ले सकते हो. आप सीधा 715 730 करके माइनस कर लो. यू कैन टेक एनी रेफरेंस. फाइन. कैलकुलेट. यू विल गेट कितना? 99 माइनस कर दो, 111. हाउ वी गेट 108? 108 इज द रोटेशन बाय मिनट हैंड. मिनट हैंड रोटेट्स एट 6 degrees per minute. And for next 18 minutes it will rotate total 108 degrees. Prakash, is it clear? This is the rotation. चलो try this one. इसी साल का क्वेश्चन है. See, I told you data will be given to you something like this. Orally करो यार, directly. Don't use your pen. थोड़ा दिमाग चलाओ. एग्जाम में ओरली नहीं करना है, बट यहां पर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. Atish, I took that angle which I know that finally I'll have to calculate, because जब hands will be at 718, वो reflex angle नहीं बचेगा, वो कम हो जाएगा. Yes, you can take 715 as the reference. जिससे नहीं विजुअलाइज हो रहा है, दे कैन यूज पेन. जरूरी नहीं है. ए करो एक बार कैलकुलेट. हो गया. What is the angle between minute hand and hour hand when the clock shows for 25 hours?
425. I know this minute hand will be exactly at 5. ठीक है, अगर R hand यहाँ होता, had this R hand been exactly at 4, this angle would be 30 degree. लेकिन R hand is not at 4, R hand is slightly past 4. Which angle do I need to calculate? I need to calculate this yellow angle. ठीक है, कैसे करूँगा? Total angle that I am taking reference is 30 degree. 30 degree में R hand has rotated this by this much amount, and when the R hand is rotating, it is decreasing this blue wala angle. It is decreasing this angle. So 30 degree minus this white wala angle will be my answer. ये कितना है? It is the angle rotated by R hand in 25 minutes. 25 minutes में it rotates by this speed, which is 12.5. So 30 minus 12.5, which is 17.5 degrees. फाइन, समझ में आया? आपने बस डायरेक्टली ये 12.5 कैलकुलेट करा एंड यू टिक्ड 12.5. ये बहुत लोगों ने मिस्टेक करी है, दे मार्क्ड 12.5. चलो ऑनलाइन पीपल चिल्ले. सी एग्जाम में डेटा विल बी मोस्टली इन दिस फॉर्म ओनली. दे विल गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर. जो हम कर रहे थे ना 718, 512, यूजुअली नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन. तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, बट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, लेट्स मूव टू रिलेटिव स्पीड. इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना. आई थिंक देयर इज स्पेस गिवन, है ना? सो पहला बेसिक चीज, स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है सबको? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेसिक चीज. सी वी विल हैव अ सेपरेट स्पीड डिस्टेंस टाइम का लेक्चर इन क्वांट, बट यहाँ पर व्हाट आई वांट you to know just the basic is speed is distance that you are traveling upon the time that you are taking to travel that particular distance. आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, you are traveling 100 kilometers for let's say there are two cars. पहले this car is traveling 100 kilometers in let's say 10 hours, so its speed will be 10 kilometers per hour. ठीक है. there is another car, it travels 100 kilometers in let's say 20 hours, its speed will be 100 by 20 distance upon speed, which is 5 kilometers per hour. कार नहीं है, साइकिल बोल दो. ठीक है. so 10 kilometers per hour, 20 kilometers, basic speed. but what is relative speed? Relative speed is speed of one person, one car, whatever is in consideration, speed of one object relative to other object. So these are two cars, they are traveling, let's say they are traveling in same direction with these speeds. Abhi they started from a common point. After 1 hour, this particular A and B, this particular car A will be how much kilometers away? 1 घंटे बाद. From this point it will move 10 kilometers in 1 hour, so it will be 10 kilometers away from this point. Car B, it will be how much kilometers away? 5. It will be 5 kilometers away. So from this point it will move 5 kilometers. Relative to this car, how much extra this car has moved? Can I say this is the distance that this car has moved extra relative to this car? It has moved 5 kilometers extra. ये कैसे आया? 10 minus 5. इतना distance 5 kilometers. ये तो आपने distance calculate करा.
if I say that this distance per unit time, this is the relative distance per unit time, time कितना था, अभी we are taking 1 hour, so can I say this will become the relative speed. Relative speed is just speed of one object relative to the other object. So now every hour this car will move 5 kilometers extra than this car. हर घंटे में this car will move 5 kilometers extra than this car. So its speed relative to this car will be 5 kilometers. 5 किलोमीटर आगे बढ़ती जाएगी ये कार. When you are sitting, in this car and observing this car, इसकी original speed नहीं दिखेगी आपको. You will observe that this car moves with a speed of 5 kilometers per hour only. You will only observe a relative speed. कभी कार में बैठे होगे, you might have observed, though both the cars are going at a very high speed, but since they are going in the same direction, आपको ये धीरे जाते हुए दिखती है, धीरे धीरे ये overtake होती है. And when it is the opposite case, when both the cars are coming head to head, आपको बहुत जल्दी से you will cross this car because their speeds will add up. यहाँ पर speeds are subtracted. Sorry, ये समझ में आया? relative speed, speed of one relative to the other. Clear? Speed of one object. बहुत टेंशन मतलब, we are not solving speed distance time here. तब इसको मैं बहुत elaborately बताऊंगा, either me और सुगम सर. अभी I am just giving you a quick glimpse of it, what is relative speed. But this is what is in linear fashion. Suppose I convert this into a rotation. ये रेस क्यों नहीं हो रहा है? चलो, instead of car A and car B, we have R hand and minute hand. Now R hand is moving. Abhi just imagine it is not a circular motion, it is a linear motion. For now, imagine करने के लिए, it's a car, minute hand, R hand नाम दे दिया. It is moving with a speed of, instead of saying 5 kilometers per hour, I am saying 5 degrees per minute. Unit change हो गई है बस. Minute hand same, instead of saying it is moving with 6 kilometers per hour, it is moving with 6 degrees per minute. Same concept. These two cars are moving. This is the faster one, this is the slower one. If I observe this car sitting in this car, if I observe minute hand sitting in the R hand, what will I see? That minute hand rotates with a speed of, या moves with a speed of 6 minus 0.5. अरे एक मिनट में this will move by 0.5 degrees and this will move by 6 degrees per minute. So this difference in their rotation will be 6 minus 0.5, that is 5.5 degrees per minute. ये समझ में आ रहा है? That this is the difference in their speeds. If this is the minute car या minute hand, this is the R hand, every minute R hand moves by this much degrees extra, this much degrees away from the R hand. इतना समझ में आया? इसको कैसे यूज करेंगे आगे बताऊंगा. बट आर यू एबल टू गेट दिस, दैट व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड रिलेटिव टू द आर हैंड? कुछ नहीं करा यार, 6 में से जो स्पीड थी ना, वी जस्ट टुक द डिफरेंस ऑफ इट. एंड व्हाई वी आर टेकिंग द डिफरेंस? बिकॉज दे आर बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर बोथ रोटेटिंग इन द सेम मैनर, क्लॉकवाइज मैनर. एक जैसे मूव कर रहे हैं ना, आपका क्लॉकवाइज ऐसा होगा. सो दे आर बोथ रोटेटिंग इन द सेम मैनर. अगर ऑपोजिट होता तो वी वुड हैव एडेड. Since they are rotating in the same manner, we just subtracted their speeds. So this is the relative speed of minute hand relative to the hour hand. Basic. अब इसको कैसे यूज करना है आगे बताता हूँ.
सपोज these are two cars moving in the same direction. These are two cars moving in the same direction. Car B is moving in this direction with the speed of 2 meter per second. Car A is moving in this direction with a speed of 5 meter per second. कुछ टाइम बाद since its speed is greater, ये इसके बराबर आ जाएगी and they will start moving together for some time. For an instant of time they will be in the same straight line. कितने टाइम बाद होगा वो? What is that particular time? वो कितने टाइम बाद होगा? When this car and this car will be aligned in the same line. Their initial distance is given to you as 15 meter. क्या? अरे बोलो, गलत होगा तो गलत होगा. 10 seconds. सब बताओ क्यों नहीं निकल रहा है आपसे? क्या नहीं समझ में आ रहा है अभी? देखो, दो कार है, आप भाग रहे हो और आपका दोस्त भाग रहा है. He is running with the speed of 2 meters per second. You are running with the speed of 5 meters per second. After a few seconds, both of you will be in the same straight line. ये कितने टाइम बाद होगा? अब समझो, डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर. ठीक है. अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलता that this car is moving with 5 meter per second, in how much time will it cover 15 meter? 3 seconds. ये तो बहुत जल्दी बोल दिया आपने. If this car is moving with 2 meter per second, in how much time will it cover 15 meters? 7.5 seconds. ये तो आपने बता दिया. But now they are not moving independently. This 15 meters is not an independent movement. This is the relative distance. So can I say, instead of taking their speeds, they are traveling, they both are traveling ना. ऐसे होगा कि कहीं जाकर they will meet. This will move, ये भी कुछ distance move करेगा. This car will also move certain distance, but they will meet on this line. Relative to this car has to move 15 meter extra, and it is traveling with relative speed क्या है? This is 5, this is 2, so 3 meter per second. 3 meter per second relative speed से it has to cover relative distance of 15. So total it will take 5 seconds. स्पीड डिस्टेंस टाइम में बहुत elaborately कवर होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ इट बिकॉज आई वांट टू यूज इट इन क्लॉक्स. ठीक है, तो डोंट वरी, ये बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर चलेगा इस पे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, है ना अभी. सो 5 सेकेंड कैसे आया? रिलेटिव डिस्टेंस दैट दे वांट टू कवर, रिलेटिव स्पीड विथ विच दे आर कवरिंग. रिलेटिव डिस्टेंस इतना कवर करना था, यही तो था. रिलेटिव स्पीड ये है. Apply same thing to clocks. If this was, suppose the time was, कितना ले लें, 2 o'clock. Suppose the time is 2 o'clock right now. 2 o'clock पे hands will be positioned something like this. Imagine that this is one of the cars, this is the other car. It will be rotating at a speed of, this is the R hand, so half degrees per minute. It will be rotating 6 degrees per minute. So this is the speed with which they are rotating. Initial distance कितना दूर है अभी? कितनी डिग्रीज? 2 सेक्टर 60 डिग्री. So it is the same situation that this is the minute hand, this is the hour hand.
our hand is moving with half degrees per minute, this is moving with 6 degrees per minute, and they want to cover this 60 degree. तो relative distance is 60 degree, relative speed 5.5. So अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि when will these two hands of the clock coincide, when will these two hands of the clock coincide between let's say 2 and 3 PM. अभी समझो, अभी लिखो मत ये चीज, ये हम क्वेश्चंस में करेंगे. So when will these two hands of the clock coincide at let's say somewhere between 2 and 3 PM. So ये यही चीज तो चीज हो गई that initially at 2 PM this is 60 degree away, so this particular hand is 60 degree away. ये 60 डिग्री कितनी देर में मूव करेगा रिलेटिव टू दिस, दिस इज द रिलेटिव डिस्टेंस, दिस इज द रिलेटिव स्पीड. तो 60 अपॉन 5.5, 5.5 को यू कैन ऑल्सो राइट 11/2. सो 60 अपॉन 11/2, बाय 2 करेंगे, दिस 2 विल गो ऊपर, तो 60/11 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज 120/11 मिनट्स. आंसर है ये कि 120/11 मिनट्स पास्ट 2 PM. सो जब 120/11 मिनट हो जाएंगे आफ्टर 2 PM, दिस टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल मीट. ये बेसिक फंडा था. अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे दिस थिंग विल बिकम मोर क्लियर. अभी तो मैं बस आपको गिविंग दिस ट्रांसलेशन ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर इनटू ईच अदर ये बता रहा था. अभी वी विल सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. बेसिक फंडा इज relative speed of minute hand relative to the hour hand is 5.5 degrees per minute. इसको आप 11/2 डिग्रीज पर मिनट भी लिख सकते हैं. ये कैसे आया था अभी भी नहीं समझ में आया, डोंट वरी, यू विल हैव एन इलैबोरेट क्लास ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम, तब और अच्छे से वी विल सी रिलेटिव वेलोसिटी. अभी के लिए जस्ट सी दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज 11/2 डिग्रीज या 5.5 डिग्रीज पर मिनट. फाइन. अभी लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस. इसमें आपको बेसिक लॉजिक लगाना है, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है. हाँ, दिस वन वो चली गई होगी. क्वेश्चन both the hands are making an angle of 180 डिग्री. इसका मतलब क्या है? they are exactly opposite. अब try to draw, imagine, जो भी आप कर रहे हो कि exact opposite कब होगा. you don't need to calculate exact time.
हो गया? How many of you are confused? See, both the hands are making an angle of 180 degree. 180 degree मतलब they are exactly opposite. उल्टा होना चाहिए. The time that is in consideration is between 4:45 to 4:55. Somewhere between this time they are asking you the question. अब between 4:45 and 4:55 where will be my R hand? R hand कहाँ होगा? Somewhere between 4 and 5. Somewhere between 4 and 5 यहाँ कहीं होगा R hand. If the R hand was at 4, exact opposite would have been 10. So अगर R hand was at 4, this hand should have been at 10, the minute hand. If the R hand was at 5, for the minute hand to make exactly 180 degree, it should have been exactly at 11. So यहाँ का opposite is this, यहाँ का opposite is this. Where will the opposite of 4 and 5 के बीच में, when this hand is there, where will its opposite lie? Somewhere between 11 and 10. इसी के बीच आएगा ना. So this should be the position of both the hands of the clock. अब see the time. This is 45, this is 50, 55, 60. So time has to be somewhere between 4:50 and 4:55. Answer is C. अरे ये सब तो बना के क्लास में देख लो. नहीं समझ में आ रहा है ना, घड़ी इसीलिए पहन के जाना चाहिए. घुमा के देख लेना कि where are the hands positioned when they are exactly opposite to each other. लेके जाना. Why not 4:50? Anisha, draw the diagram exactly at 4:50. This is 6. This is 50. This is 4:50. Now for these two hands to make 180 degree, this hand should have been at 4, then this angle would be 180, but actually this hand is slightly past 4. ठीक है. Now try this one. ये तो कर लिया था हमने. हाँ, सब में अप्लाई होगा, मैं करके बताता हूँ. We already solved this question, but एक बार खुद से ट्राई करो. घुमा के देख रहे थे क्या? See, in this kinds of question, take a reference time. यहाँ पर from here you can get a hint that what should be your reference time. They are asking us time some minutes past 2 p.m. So time has to be some minutes past 2 p.m. So initial reference is, let's say 2. Both the hands starts rotating. Now you can see when this minute hand starts rotating, it will
come at 1, then at 2. By the time it is at 2, this R hand would have moved slightly past 2, थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा. So this minute hand will cross this R hand. जब minute hand comes at 3, the R hand is still somewhere between 2 and 3. So this minute hand will cross this hand somewhere between 2 and 3. 2 और 3 के बीच में क्रॉस करेगा. Is this clear? ठीक है. Initially, what is the distance between these two hands? 60 degree. So relative distance initially is 60 degree. अगर ये यहीं रुका होता, अगर मैंने इसको पकड़ लिया यहीं पर, and if I allowed this hand to move relative to this, so it moves relative to the R hand by the speed of 5.5 degrees per minute या 11/2 degrees per minute. इस स्पीड से ये इसके पास जाता, इस स्पीड से minute hand will go towards the R hand. It has to cover this much distance. So distance upon speed is equal to distance upon time. अगर मैं टाइम को इधर ले गया, स्पीड को इधर ले आया, so time is equal to distance upon speed. यही टाइम you need to calculate. This is the distance, this is the speed. It is just 120 by 11 minutes past 2. एक बार ये समझ जाओगे, इवेंचुअली सारे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू सी द इनिशियल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है डायरेक्ट आप सेक्टर से देख सकते हो. 2 सेक्टर्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड विच इज 11/2. जस्ट सी द टाइम, टेक एन इनिशियल रेफरेंस, व्हाट इज दैट एंगल, डिवाइडेड बाय 11/2, बस. बट ये क्यों कर रहे हैं, ये सब बुक्स में लिखा होता है. कैलकुलेट इट एंड मल्टीप्लाई बाय 2/11 ऐसे लिखा होता है. कैलकुलेट दिस डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय 2/11. ये क्यों हो रहा है? दिस इज नथिंग बट डिविजन बाय 11/2. दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड. ये सब बुक्स में आपको ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे कि ऐसे करो और मल्टीप्लाई बाय 2/11. व्हाट इज दिस 2/11, कहाँ से आया? यही है सारा कुछ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द सेम थिंग बट मोर कॉन्सेप्चुअली. रटना नहीं है कुछ, ये सब बुक्स में आपको मिल जाएगा. अभी विल सी अनदर कॉन्सेप्ट, वहां पर 12/11 से मल्टीप्लाई होगा. बच्चे बस रट लेते हैं कि आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद 12/11, आई विल गेट द आंसर. बट व्हाई यू आर डूइंग दिस, ये समझना है आज. हाँ, 11/2 क्या है? रिलेटिव स्पीड. 6 - 1/2, 6 - 1/2, 6 into 2 12 - 1/2, it is 11/2. अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो क्या कि हाउ 6 - 1/2 इज 11/2? नहीं, चलो ट्राई दिस. अच्छा चलो, सपोज द टाइम वॉज 3 to 4 PM. अभी 2 to 3 PM का करा था ना. सपोज द टाइम वॉज बिटवीन 3 to 4 PM. यू नीड टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पास्ट 3 PM when both the hands of the clock will coincide. सेम क्वेश्चन जो अभी करा है, हटा रहा हूं इसको. सेम क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ 2 and 3 इट इज 3 and 4 o'clock. ऑप्शंस विल चेंज. हाँ हाँ, हाँ अभी हटा दिया मैंने. आई विल एक्सप्लेन. हाँ बताओ आप. हाँ करो.
See, the time given is between 3 and 4 o'clock. 3 and 4 के बीच में somewhere both the hands will coincide. Let's say initial reference I am taking it as 3 o'clock. 3 o'clock में what will be the distance between both the hands? 90 degree. At 3 o'clock, positions of the hands will be like this. So they are initially 90 degrees apart. Relative distance is 90 degree. Relative speed is 11 by 2. Your answer has to be 180 by 11 minutes past 3 PM. Direct answer. आपको कुछ नहीं सोचना है. You just need to see what is the initial distance. Relative speed is always same. It is 11 by 2. तो बस ये एंगल निकालना है जो हम अभी तक कर रहे थे ना. कितने सेक्टर्स? These are 3 sectors. 3 sectors, 90 degree. This is the distance. Divide by 11 by 2. समझ में आया? आप बताओ, घड़ी का जो हैंड्स हैं उनकी स्पीड चेंज होती है क्या? हमेशा देयर स्पीड इज कांस्टेंट. we are always taking the accurate clock. If their speed is always constant, their relative speed will always be constant. So their relative speed will always be 11 by 2 अगर faulty clock नहीं है तो. ठीक है. If it was 4 and 5 o'clock, between 4 and 5 o'clock, where will these hands coincide? हाँ 270 क्यों? हाँ, initial angle reference will be 4 और 5 दिया है तो रेफरेंस इज 4 o'clock. 4 o'clock में इनिशियल एंगल इज, अरे 4 o'clock में दिस एंगल, आई एम आस्किंग अबाउट दिस एंगल, 120 डिग्री. सो इनिशियल डिस्टेंस दैट द हैंड्स नीड टू कवर इज 120 डिग्री. व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? 11 by 2. तो 120 अपॉन 11 by 2, जितना आया है ना 2 ऊपर चले जाएगा. यू कैन जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट बाय 2. So 120 into 2, 240. 240 by 11 is the answer. Past 4 PM. ये भी होना चाहिए. ठीक है, हम 4 बजे के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? आ गया? एकदम हंसी बदल जाती है ना, एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं तुम्हारे चेहरे के. अब आ गया समझ में. ऐसे कर लेना बस. करो. हो गया? अब फटाफट आंसर आ रहे थे. अब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी. बिटवीन 7 and 8 o'clock, रेफरेंस 7 o'clock. 7 o'clock में कितना एंगल है? 210 डिग्री. 7 सेक्टर्स, 7 into 30, 210. इनिशियल एंगल इज 210. इनिशियल स्पीड, सॉरी रिलेटिव स्पीड 11 by 2. 210 अपॉन 11 by 2. करने की जरूरत तो नहीं है. ये समझना इंपॉर्टेंट है. व्हाई वी आर डूइंग दिस. वंस यू गेट दिस, आपको समझ में आ जाएगी चीजें फटाफट कैसे करना है. यही बुक्स में लिखा होता है कि इसको रट लो. दैट विल मल्टीप्लाई बाय 2 by 11. क्या हुआ? फाइन. ऑनलाइन पीपल, इनिशियल एंगल 7 to 8. I am taking 7 as the reference. So this angle, initial angle is 210 degrees. 7 into 30. So distance upon relative speed. Distance is 210 degree. यहाँ से यहाँ तक पूरा. कब coincide करेंगे? They will coincide when this hand starts rotating from here. It rotates 210 degree relative to the R hand and meets it somewhere here. मैम क्लॉक कैसे रोटेट करेगी? क्लॉक तो ऐसे ही रोटेट करेगी ना. इट वोंट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. नहीं. दे आर rotating and they will coincide. They won't rotate it like this just to coincide. They will rotate it clockwise only.
अरे यार घड़ी तो ऐसे ही रोटेट करेगी ना, हैंड्स विल मूव लाइक दिस ओनली, दे वोंट रोटेट इट लाइक दिस जस्ट बिकॉज दे वांट टू कोइंसाइड। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा, आज आपके लिए भारी हो जाएगा। अभी के लिए यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 11/2 कैसे आया? 11/2 इज द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होता है स्पीड ऑफ वन हैंड रिलेटिव टू द अदर। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड माइनस स्पीड ऑफ आवर हैंड। स्पीड ऑफ मिनट हैंड वाज 6 डिग्रीज। क्लास में सबसे पहले सीखा था व्हाट इज देयर स्पीड। स्पीड ऑफ आवर हैंड वाज हाफ डिग्रीज। सो 6 माइनस हाफ 12 माइनस 1/2 विच इज 11/2। चलो पीपल आर कमेंटिंग, मजा आया आज क्लास में। आया कुछ? चलो थैंक यू सो मच, बट अभी क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन। See, we'll solve all these questions again with the concept of minute spaces. ये दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, जस्ट द थिंकिंग इज डिफरेंट। हम ये सारे क्वेश्चन जो ये अभी कर रहे हैं ना टाइम निकालने के, ऑल दीज क्वेश्चंस विल अगेन सॉल्व इट टुमारो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट स्पेसेस। आपको रिलेटिव स्पीड पसंद आए, यू कैन सॉल्व बाय रिलेटिव स्पीड। आपको मिनट स्पेस समझ में आ जाए, आप उससे सॉल्व कर लेना। दोनों अपने आप में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी के लिए सॉल्व दिस। ये कर लिया है क्या? अच्छा, हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट 180 डिग्रीज। नाउ दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, दे आर एट 180 डिग्रीज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। I'm not giving you worksheets now. Abhi, I'll give you worksheets once this topic is completed. Kal we'll continue this topic. हो गया किसी से? जो कर लेगा उसको चॉकलेट। क्या? गेस नहीं, आई वांट द लॉजिक। गेस तो क्या है, हर चौथा बंदा चॉकलेट ले जाएगा एक एक गेस करके। नहीं? चलो अब एक हिंट दूंगा और आप सब ओरली कर लोगे इसको। See, find the time between 7 and 8 o'clock. Both these hands are at 180 degree. This is the initial situation. The time right now is 7 o'clock. अब tell me, जब these hands are at 180 degree, can I say if I extend this hand backwards somewhere here, अगर यहाँ पर I have extended this hand backwards, our hand, अभी ऐसे था, I have extended this hand backwards, it will be at 1. If it is at 7, this extended hand will be at 1. Can I say if I want to calculate when these two hands are at 180 degree, I just need to calculate when this hand, minute hand, coincide with this extended hand. अरे जब ये इसके बराबर आ जाएगा तब इसके ऑपोजिट हो जाएगा, because this is nothing but an extended part of it. This is nothing but an extended. हाँ, they will move, but they will move together and it will always be opposite to this.
So when this minute hand meets this particular extended part of this hand, both this hand will be opposite. अब देख लो कितना दूर है. Distance between these two, one sector is 30 degree, so it has to move 30 degrees. 30 by 11 by 2, answer is 60 by 11. यही आ रहा था. समझ आया? Your expression, oh, yes, says it all. हाँ, आर हैंड विल ऑल्सो मूव. ऐसा नहीं कह रहा हूं दैट दिस विल बी स्टेशनरी. बोथ दिस हैंड्स विल मूव. ये सब कुछ मूव करेगा, बट बाय द टाइम दे विल कोइंसाइड. दिस इज 7 6 1 2 8 9. थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट बना है, बट आप इमेजिन कर लेना प्लीज. बाय द टाइम दीज टू कोइंसाइड दे विल मूव slightly past 7 and slightly past 1, this extended part. इतना मूव कर जाएगा ये भी, but still this will coincide with this hand. When this coincides with this hand, it will be completely opposite. मूव तो हमेशा ही कर रहे हैं सारे hands, they are not stationary. अरे 70 by 11 नहीं होगा. See, what I am calculating is जब ये relative to this hand covers 30 degrees, when my R hand, minute hand relative to this extended part, इसको आप अलग hand मत देखो ना, just look it as the complete R hand. ये पूरा घूम रहा है एक साथ, ये एक साथ घूमेगा. So when this moves, बस इन दोनों को meet ही तो करना है. So when this hand meets this particular extended part, तब it will be completely opposite. Distance is just 30 degrees, so it has to move 30 degrees relative to it. अब ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, लेकिन ये थोड़ा तेज मूव कर रहा है. So by the time it reaches somewhere here, it will come and meet it. So मूव दोनों कर रहे हैं. So they will meet after कितना 60 by 11 minutes past 7. ठीक है, एक और क्वेश्चन करें. ये तो इजी है, बेसिक मैथ्स. यहां पर इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इट इज 15 3 by 11, 14 4 by 11, 16 4 by 11. किसको नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस? बेसिक मैथ्स नहीं देखा ना आपने, फिर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आंसर between 3 and 4 o'clock. When will they coincide? आप मुझे नॉर्मल फॉर्म में बता दो. Between 3 and 4, initial time, initial reference is 3. So this is 90 degrees. 90 by 11 by 2, which is 180 by 11. Now you just need to see कि 180 by 11 को how can I represent. किसको ये नहीं करते आता है? सबको आता है. चलो फिर मैं नहीं बताऊंगा, सबको आता है तो. 180 by 11 कितने से डिवाइड होगा? अरे आता है. 1 जा 70, 6 जा, ऐसे करते हैं. So by 11, 16 4 by 11, this is the remainder, this is the quotient. So 16 4 by 11 is the answer. It's just कि एग्जाम में आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस मिल सकते हैं आंसर्स के भी. Same. Solve it. Between 1 and 2,
what is the distance, initial distance? 30 degree. So 30 upon 11 by 2. by 11 by 2, which is 60 by 11. Now 60 by 11 can be written as 11 5s are 55 plus 5 60 upon 11. 5 by 11 minutes past 1. ठीक है, डाउट तो नहीं है ना इसमें? इसको कल करेंगे. अब यहाँ से विल कंटिन्यू टुमारो. फर्स्ट विल सी व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट स्पेसेस. बहुत बढ़िया है ये भी, मज़ा आ जाएगा इसमें भी आपको. एंड देन विल स्टार्ट विथ ऑल दीज क्वेश्चंस. फाइन. चलो, जिसको स्टिल इफ यू हैव डाउट, ट्राई टू सी दिस लेक्चर वंस अगेन. एक बार रिलेटिव स्पीड वाला अगर आपको डाउट है तो विल अगेन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस जो हमने करे हैं ना अभी रिलेटिव स्पीड से. विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस बाय मिनट स्पेसेस ऑल्सो. इसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे यू कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट. चलो, आई एम नॉट गिविंग यू वर्कशीट राइट नाउ. विल कंप्लीट दिस टॉपिक एंड देन आई विल गिव यू वर्कशीट्स एंड PYQs. चलो, थैंक यू एवरीवन. Thank you online people. Just an announcement again. See, there are various guidelines coming for coaching institutes almost every day or every next day. So अगर कुछ change होगा तो be like there on the Telegram channel. Be updated there. I'll update it there. Check it like routinely every day. I'll post it there because it might happen that कभी कभी बंद करना पड़ जाएगा in case सुप्रीम, आज भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का there was a new guideline for coaching institutes. So in case it happens then we might continue it on the online basis for a few let's say couple of classes जब तक कि offline is properly conducted or not. You can come offline maybe if not in this batch then in the next batch. बट आप आ सकते हो, उसकी चिंता नहीं है. सो अभी के लिए वी कैन फिनिश दिस इन द ऑनलाइन मोड इन केस द रेस्ट्रिक्शंस आर देयर. सो वी कैन फिनिश इन द ऑनलाइन मोड. यू कैन कम बैक इन द ऑफलाइन मोड लेटर अगर ऐसा हुआ तो. इफ नॉट तब तो ऑफलाइन चलेगी. फाइन.